चित्रलेखा चित्रलेखा हाँ सही है चल रहे 150 140 is not there okay 140 not there Mataji, Hare Krishna. 170 is also not there, okay? Yeah. 150 चित्रलेखा हो गया. 160 सुशील गुप्ता. 170 संपीता दास. 180 सुमित जलन. सुमित करना 180 सुमित जलन उधर 190 संजय पछिया संजय पछिया संजय भुनिया 150 हरी प्रिया 121 सुमलता 121 सुमलता जाइए सुमलता 121 122 सुमन अग्रवाल 122 122 सुमन अग्रवाल 123 मोनिका अग्रवाल 123 मोनिका अग्रवाल 124 सोजा पुरुषोत्तम सोजा माताजी बोल 125 सुजाता प्रकाश 126 हरे कृष्णा 126 मुरुमयी रत्नेकर 126 सुजाता प्रकाश 127 लवली बोली 127 लवली बोली 128 गणेश कुलकर्णी 128 गणेश कुलकर्णी 129 सुशांत शेट्टी 129 and last 130 Manju Ravi Pal 130
हरे कृष्ण। So number one, I will say, okay, this is really what I want. First, Suresh Pillai. Number two, Rajesh Suresh Pillai. Three, Kasubri Dinesh Bhai. Number four, Dinesh Bhai Koshia. Number five, Lakshmiyan. Number six, Muniraj. Number seven, Sridevi. Number eight, Vinod. Number nine, Geeta Paliwal. Number 10, Gopal Paliwal. Number 11, Arvind Nandi. Number 12, Smita Arvind Nair. 13, Jayashri Patel. 14, Meena Ben Jayatwal Rawal. 15, Anita Goyal. And 16, Bhabhi Patel. 17, Sijal Goyal. 18, Ashar Rajpute. 19, Krishna Kumar Gupta. 20, Krupal Yadav Agarwal. 21, Kumar 22, Gurman Patke. टेबल उस तरफ लाएंगे तो मुझे आपको पास हो जाएगा। हाँ चलेगा। एक मिनट है। 27, Amuja Devi. 28, Anil K. 29, Geeta. Girija Vendas. टेम्पल ओपन Girija Vendas. टेम्पल ओपन होने का टाइम है 31, Mahaliki. बाकी तो इधर ही हाँ Mahaliki. 32, Maya Baba. 33, Sri Manohar. 34, Ricky. 35, Smita Devi. 36, Soumya P. 37, Pundi Krishnan. 38, Vijay Kumari Amma. 39, Vidya. 40, Geeta. 41, Reena. 42, Sushma. 43, Deepti. 44, Aluka Bansal. 45, Anand. 46, Anita. 47, Anurag. 48, Madhu Kiran. 49, Neem Singh. 50, Praveen Gupta. 51, Shuna. 52, Nagway. 53, Sangeeta Manya. 54, Sheila Manya. 55, Sunita Jay. 56, Sunita Jay. 58, Uma Kulkarni. 57, Uma Kulkarni. G. Vijay Kumari. Sangeeta. 59, Sangeeta. 59, okay. 60, Usha Bhaskaran. 61, Singaram Selvam. 62, Premarani. 63, D.V. Prema. 64, D.V. Padma. 65, Pushpam. 66, Anusuya. 67, Mallika. 68, Meenakshi. 69, Anu. 70, Nota Singh. 71, Samsula. 72, Deepti Sahu. 73, Gunash Joshi. 78, Rajashri. 74, 75, Raju. 76, Santosh. 77, Sri Bina. 78, Sneha Singh. 79, Sumana. 80, Rajalakshmi. 81, Manasila. 82, Krishna K. 83, Swapna. 84, Lavanya. 85, Radhika. 86, Nagamani. 87, Karthik Kalyan. 88, Ramaswamy Chaturvedi. 89, Geeta Chaudhary. 90, Jagdish Patla.
91 Gita. Gita. 92 Premalata. 93 Prashant Kumar. 94 Anand Kulkarni. संजय पुनिया है 95 Chandrika. 96 Jayalakshmi Acharya. श्री 97 हरिप्रिया प्रेमलता 98 Madhuri. 99 Muralidhar प्रेमलता Thakur. गुप्ता हाँ हाँ वो 100 श्री में Shamika. कहा था एसएस लगाती हूँ 101 Vinod हाँ, है। Karmal. ठीक 102 Richa Bansal. 103 Indrajit. 104 Chandan. 105 Srinivas Rao. है स्पेस 106 Leela. कर सकते 107 Namnath Gupta. 108 Suman Kulkarni. 109 Shivi Agarwal. 110 Surekha Mehta. 111 Jagdish Pathak. 112 Tara. 113 Sugana Shetty. 115 Chitra Lekha. 115. 116 Sushil Gupta. 116. 117 Sapita Das. 118 Sumit Jalan. 119 Sanjay Apunya. 120 Sheila Priya. 121 Sumanlata. 122 Suman Agarwal. 123 Monica Agarwal. 124 Soja Purushottam. 125 Sujata Prakash. 126 Gurunmani. 127 Lovely Kohli. 128 Ganesh Kulkarni. 129 Shubhra Shetty. 130 Manju Ravi. Okay, done. Brahma initiative people can sit here. Those are taking Brahma initiation can sit here. Brahma initiative people. Yes. Shri Krishna Prasad Das. Aradhya Vedapati Das. Anuradha Sureshwari Das. Kundala Gopika Devi Das. Yogeshwar Srilakshmi Devi Das. Durga Dileshwari Devi Das. Ishwari Bharati Devi Das. Gaur Manmohan Das. Jagadananda Murali Das. Sripal Lakshmi Devi Das. अच्छा अभी आपके पास भक्त लोग गाएंगे, ध्यान से सुनिए। आपको पूछेंगे कि 4 नियम क्या है, आपको बोलना होगा और आपको 16 माला सारा जीवन गायन करनी है। आपको पूछेंगे, आपको हाँ बोलना होगा और आपको पूछेंगे कि आप गुरु जी को प्रभुपाद जी की जो इंस्ट्रक्शंस जो आदेश है उनको फॉलो करने में आप सहाय करेंगे। ये 3 चीज आपको पूछेंगे, आप सब छोटे से बोलिएगा और बाद में हमारे वीडियो भी पढ़ेंगे। Hare Krishna, Telugu and Tamil. All of you understand English? He's told, okay, so I will tell you in English. So the first thing is 4 mandatory principles you will be taking an oath. Individually we come and you have to take the oath. Second one is we will have 16 rounds of chanting. And third one is we will assist Srila Prabhupada mission. Clear? All understood? Anyone did not understand, raise your hand. Adham kaam hote raise chayenge hand. Puri jana raise your hand. Understood? Clear? Hare Krishna.
Some of devotees, initiated devotees who are aware, come forward, please help. नहीं तो ये काम है। इसका जूम लिंक कहाँ से मिलेगा? हाँ जूम लिंक दीजिए इसका। अपना टी वाला टी टेम्पल मंगला आरती सुबह। The devotees are asking to request you the first stand up in prayer and we take oath for the four divinity principles. Number one. The next one is basically we will take minimum 16 rounds of chanting and yeah. We will now.
कृष्ण प्रभु जी जी इसने ऑलरेडी Hare Krishna. Somebody can help me in Kantimala. Some volunteers. Hare Krishna. Yeah.
બાકી જેટલું ઓછું રસ્તામાં આવે એટલું સારું. आप खड़े हो जाओ, बाद में बहुत बोले मत बोले। If you want power, no, you can take power from this one and this is down. So you can,
विशाल प्रभु, विशाल प्रभु। ज्वाइन अगर होगा यहाँ से तो यहाँ पे गुरुमारा जाएंगे ना, सपोज ये आदमी है, हाँ। 3 डॉट पे क्लिक करके पिन कर देंगे तो वो सामने वाला आदमी आ जाएगा। हाँ, पूरा स्क्रीन पे तो वो जयपत का महाराज का नाम सही होंगे ना? वो देखेंगे किस नाम से आते हैं, जेपीएस आते हैं, जब तक महाराज आते हैं क्या आते हैं वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी टाइम है, पर थोड़ा दिमाग में रखिए। उसको ठीक है, उनको अनम्यूट करना पड़ेगा। यहाँ से अनम्यूट देखिए, पार्टिसिपेंट ऑडियो किधर से पे हो जाएगा, आज टू अनम्यूट वो ऑडियो किधर से पे हो जाएगा। नहीं अभी ऑडियो इसमें आएगा, इसमें वो ज्वाइन करेंगे, बोलेंगे और यहाँ से आता है ऑडियो, तो ऑडियो इससे लेना, ये इंटरनल ऑडियो इससे लेना, कनेक्ट कर दीजिए। नहीं बड़ा मतलब क्या, तार का साइज तो बड़ा है, कौन सा कनेक्टर कौन सा लगेगा? ये रहा बड़ा, ये रहा। यस बट ऐसा है, उसमें चाहिए, उसके लिए वो चाहिए। दोनों से इस साइड ऑडियो मोटा, आपके पास वो है कौन सा? सबका मोटा पिन लगता है, इसमें छोटा पिन है। आप देख उसी में ऑडियो आउटपुट नहीं देख सकते क्या? उधर फोन लगा के उसमें कौन सा अकॉर्ड एक बार दिखा देगा। हाँ, फोन लगाना पड़ेगा, फोन और माइक उनको आ जाएंगे। तो अपना प्रभु ही हो सकता है हम लोग को इसको अनम्यूट करके यहाँ पे माइक लगाना पड़ेगा, तो माइक से आ जाएगा। अब नहीं आएगा तो माइक लगा देंगे, माइक रेडी रखना पड़ेगा। इस माइक से ये माइक यहाँ रख देंगे तो उसको हाँ, सब आ जाएगा। हाँ, हाँ। कॉर्डलेस वाला को रेडी करना रेडी करके रख देते हैं। वो ये सारे पार्टिसिपेंट बाजू में कैसे आते हैं? तो ये साइड में एक आते हैं ना? ठीक है, वो स्क्रीन पे दिख रहा है जैसे
पावर खत्म हो रहा है, डायरेक्ट करता है। ये पावर जा नहीं रहा। मैं अपना लगाऊं कैमरा ये सर। जी इसी से सारा चलता है, वो सिग्नल हुआ वो सब सही है। ये लगा दें, ये लगा दें। हाँ वही वो मैं अपना इसको रिकॉर्ड हैंड ऑयल लगा लीजिए। नमो विष्णु पदाय विष्णु प्रसाय भूतले विष्णु स्वामी नमः शिवाय पदाय विष्णु ये गाय की प्रदाय ने गौ पदा नाम की गाय नागर नाम ताने नमो विष्णु पदाय विष्णु भूतले विष्णु स्वामी नमस्ते इसमें कौन सा कैमरा सिलेक्ट करूँ? Yes. नहीं प्रॉब्लम। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Srila Krishnadas Kaviraj Goswami has said that Janma Jani Kodi Shravan Kirtan ये हटाइए यार, ये हटाइए, क्या? ये हटाइए इसको। Prabhu Dana by Krishna Pranam. If we commit offenses in the chanting of the holy name, then even we will be chanting for many birds. इसका चार्जर We will not get the ultimate goal of the chanting, which is love of Lord Krishna. So these 10 offenses are found in the Padma Purana. कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है कि अगर हम 10 नामापराध के साथ कोटि जन्मों तक भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें तो भी हम हमारा कर्तव्य है उसको प्राप्त नहीं करें, तो हमको जानना चाहिए वो क्या है। The first offense, and for us, we could say the most difficult, the most challenging. The first offense is to vilify, blaspheme great devotees who have given their lives to propagating the holy name all over the world. Our movement is a preaching movement. We are expanding all over the world. Here we are expanding. सबसे बड़ा निराला है ये भगवान के भक्त की निंदा करना जिसने अपना जीवन भगवान नाम के प्रचार में व्यतीत किया। Here we have expanded. We have new temple in Mangaluru. इस्कॉन ने अपना विस्तार किया है और मंगलुरु में ये नया भव्य मंदिर बनाया है। And similarly, all over the world, ISKCON is expanding and opening new projects. इसी तरह पूरे विश्व में इस्कॉन नए प्रोजेक्ट बना रहा है। So in this way, the life of the devotee is very exciting and busy. Exciting and busy. Life of the devotee. जो इतने सारे प्रोजेक्ट विश्व में इस्कॉन ला रहा है तो उसके कारण हम
हम सभी भक्तों का जीवन जो है एक बहुत ही उत्साहजनक और प्रेरणादायी बनेगा पूरे विश्व के लिए। And sometimes, because of the pressure of preaching Krishna consciousness, we have some unfortunate interaction with the other devotees. और प्रीचिंग का कृष्ण भावनामृत के प्रचार करने का जो दबाव होता है, उसके कारण दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में हमें दूसरे भक्तों के साथ ऐसा इंटरेक्शन या तो व्यवहार या सपोर्ट आपने होती है। So in this way, the tendency to be critical of the other devotees is prominent. तो इस तरह से दूसरे भक्तों की निंदा करना एक बहुत ही सूक्ष्म और क्रिटिकल एस्पेक्ट है। And so we have to be very cautious not to speak ill of another devotee. हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए कि हमें दूसरे भक्तों के बारे में बिल्कुल ही निंदनीय या अपमानजनक शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। We have to overcome the urge to be critical and speak critically of the devotees. हमें हमारी जो भावना है कि जिसमें हमको दूसरे भक्तों के बारे में कुछ भी गलत या अपमानजनक शब्द उपयोग करना है या सोचना है, ऐसी भावना को हमें बिल्कुल ही नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। We should learn to glorify and speak in an appreciative way of the Vaishnavas. हमें दूसरे वैष्णव और भक्तों का जो व्यवहार है उसको महिमान्वित करने का प्रयत्न करना चाहिए। And in this way, we will become favored by Lord Shri Krishna. और ऐसा करके हम भगवान कृष्ण के बहुत ही प्रिय स्वजन बन सकते हैं। The second offense, to consider the names of demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or independent of the name of Lord Vishnu. दूसरा नाम अपराध है कि शिव आदि देवी देवताओं का के नाम को भगवान कृष्ण के नाम के सम्मान या उससे महत्वपूर्ण समझना। The specific feature of the name of Lord Krishna is that by chanting it, one attains perfection in life. और श्री कृष्ण के नामों का महत्व ये है कि उनको रट कर व्यक्ति जो है अपने जीवन का की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। A perfection which is even beyond liberation. वो पूर्णता के जो मुक्ति के भी परे है। Hare Krishna, Mahaprabhu's Guru, Ishwara Bhuri Prabhupada, Mahaprabhu's Guru, on the day of his initiation, he said, महाप्रभु के जो गुरु थे ईश्वर पूरी प्रभुपाद, उन्होंने जब महाप्रभु को दीक्षा दिया तो उस दिन उन्होंने ये कहा, when Lord Chaitanya inquired, what mantra have you given me? Kiva mantra diyo Gosha, Chivatas Bho, what is its power? चैतन्य महाप्रभु ने जब पूछा कि ये कौन सा मंत्र आपने दिया है मुझे? Jogati mantra korele paro. I become crazy, I become chanting this mantra. चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं कि ये कैसा मंत्र है जिसको जपते जपते मैं पागल बन जा रहा हूँ। And Ishwara Bhuri Prabhupada answered the question, Kiva mantra diyo, what mantra have you given? और ईश्वर पूरी प्रभुपाद ने बताया कि मैंने वो मंत्र दिया है। Hare Krishna Mahamantra Jai Kashyapa Jai Jope Kare Krishna Upajaya Bhav. Jai Jope. Whoever chants the name of Krishna, Upajaya Krishna Upajaya Bhav, it will awaken your love for Krishna. ईश्वर पूरी बात जो है चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो भी करेगा। In this way, we should understand the unique nature of the name of Krishna. और जो भी ये जप करेगा उसके हृदय में भरवा हुआ कृष्ण प्रेम जो है वो बाहर आ जाएगा। Number 3, to disobey the orders of the spiritual master. तीसरा नाम अपराध है कि आध्यात्मिक गुरु के आदेशों की अवहेलना करना। The orders that we receive on the initiation day, they are the most important orders. आज दीक्षा के दिन हमें जो आदेश मिलते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण आदेश है गुरु महाराज से दिए गए। To chant minimum 16 rounds Hare Krishna Mahamantra. प्रमुखतः हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला मिनिमम कम से कम करना डेली टिल द लास्ट डे And to strictly follow the 4 regulative principles. और 4
नियमनकारी सिद्धांतों का जीवन भर पालन करना। By following the four regulative principles, we keep our heart and consciousness pure. ये चार नियमनकारी सिद्धांतों का पालन करने से हमारी जो चेतना है वो बहुत ही पवित्र रहेगी। And this vow should be maintained for the rest of one's life. और ये जो नियम है हमें हमारे जीवन पूरे जीवन तक आखिरी सांस तक हमें उसको निभाना है। And one should always chant minimum of 16 rounds Hare Krishna Mahamantra on the Japamala. और जो आपको जपमाला गुरु महाराज से मिल रही है उसी पे आपको मिनिमम कम से कम 16 माला रोज हरे कृष्ण महामंत्र जपना है। The Japamala that one will receive today. जो जपमाला आज आपको दिया जाएगा। In addition to those orders, any additional order one receives from the spiritual master should also be obeyed. और ये चार नियमनकारी सिद्धांत और 16 माला के उपरांत कोई आपको एडिशनल कोई भी मिला जाता है तो उन्हें भी आपको पालन करना है। His Holiness Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj, he received more than 25 specific orders from Srila Prabhupada. और इस में जयपताका स्वामी महाराज को 25 से भी ज्यादा स्पेसिफिक जो ऑर्डर है श्रीला प्रभुपाद से मिले थे, जबकि हमारे पास ये चार नियमनकारी सिद्धांत और 16 माला है। In this way, in addition to performing the sadhana of the chanting and following principles, one should also give one's effort to serve Guru Maharaj in fulfilling his the orders that Srila Prabhupada gave him. तो ये चार नियमनकारी सिद्धांत और 16 माला के उपरांत हमें ये भी प्रयत्न करना चाहिए कि गुरु महाराज को श्रीला प्रभुपाद से जो ये आदेश मिले हैं उनको पूर्ण करने में हम जो भी सहायता कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। And whatever specific order one receives from Guru Maharaj, one should obey. और आपको स्पेसिफिकली जो भी कोई ऑर्डर अगर मिलता है गुरु महाराज से तो वो भी आपको जीवन भर पालन करना चाहिए। Number 4, to blaspheme the Vedic scriptures or scriptures in pursuance of the Vedic version. चौथा नाम अपराध है कि वेद या वेद से गणित शास्त्र है उनकी निंदा करना। Maya mukto jivana ishtakta Krishna jnana. Jiva kripa koyo Krishna ved Puran. It's impossible for us to extricate ourselves from the illusory energy without taking instruction and guidance from the scripture. ये असंभव है कि शास्त्रों के मार्गदर्शन के बिना हम अपने आप को माया के अंधकार से बाहर निकाल पाए। Jiva kripa koyo Krishna ved Puran. Out of mercy for the conditioned souls, Krishna expands in the Ved and Puran so that by hearing these scriptures we can keep his association and take his guidance. अपनी अकारण और अहेतु की दया से कृष्ण अपने आप को ये शास्त्र जो है वेद और पुराण उसमें विस्तारित करते हैं और ऐसे शास्त्र को पढ़ने से सुनने से हम जो है भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। The holy scriptures are a great blessing in the life of the sadhaka, in the life of the devotee. एक साधक और एक भक्त के जीवन में ये जो शास्त्र है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। Tathayanta Shyamam Nityam. By constantly discussing Krishna's instructions in the scriptures, सतत भगवान श्री कृष्ण की जो सूचना हमको शास्त्र में मिलती है उनकी चर्चा करने से Tushanti cha Ramanti cha. From this, the Vaishnavas get their pleasure. एक भक्त को एक वैष्णव को उससे आनंद और संतोष की प्राप्ति होगी। So, for these reasons, we should always treat the scriptures with reverence. तो इस कारण हमको शास्त्रों को बहुत ही श्रद्धा और मान के साथ देखना चाहिए, सुनना चाहिए। To consider the number 5, to consider the glories of chanting Hare Krishna to be an imagination. पांचवा नाम अपराध है कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। What an extraordinary phenomena we are witnessing today. आज एक अद्भुत घटना घटी जा रही है। As a result of chanting Hare Krishna, you have all decided to give your life in the service of Guru and Gauranga. आप सभी ने आज अपना जीवन गुरु और गौरांग की सेवा में
रिलीज करने का निश्चय किया है बहुत अद्भुत घटना। As a result of chanting Hare Krishna, devotees are inspired. This temple has manifest. और हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति शक्ति से आज ये अद्भुत मंदिर जो यहाँ हम देख रहे हैं उसका निर्माण हो सका है। Hare Krishna Mahamantra has spread all over the world. The foreign, with these foreign people, they've also given their life for the service of Krishna because of the power of chanting Hare Krishna. हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति से आज ये जो हरे कृष्ण ये हमारा मूवमेंट है इसको मूवमेंट वो पूरे विश्व के कोने कोने में फैल So रहा है। certainly we should never consider the glories of the holy name to be an imagination. तो हमें कभी भी हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। Number 6, to give some interpretation on the holy name. छठा नाम अपराध है कि हरिनाम का कोई अर्थ निकालना। Simply we have to hear the holy name. हमें केवल हरे कृष्ण महामंत्र को सुनना है, There is no interpretation. उसका कोई अर्थ नहीं निकालना है। Chanting Hare Krishna means hearing the holy name. हरे कृष्ण महामंत्र जपना मतलब कि भगवान के पवित्र नामों का श्रवण करना। As Mahaprabhu explained to Sanatana Goswami Prabhupada, Shravanadi Shuddha Chitte Koraya Udoy. Based on hearing Shravanadi Shuddha Chitte, one's heart becomes clean, one's heart becomes pure. इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी बात को बताया, श्रवणादि सुधि पे करिए उदय। ऐसे ही अब हरे कृष्ण महामंत्र के जप का श्रवण करते हैं हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। So by properly chanting Koraya Udoy, one's dormant love for Krishna will be revived. तो इस तरह से ध्यान से हरे कृष्ण महामंत्र को जपने से हमारे हृदय में लगा हुआ विश्व प्रेम प्रकट हो जाता है। So we should learn to chant the japa properly. हमें हरे कृष्ण महामंत्र के जप को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए और सीखना चाहिए। As Krishna explains in Bhagavad Gita, Bhajanti Ananda Manasa. When we're chanting, we should not be doing other work. तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है भजन की अनन्य मनसा। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमें बिल्कुल ही बेध्यान नहीं होना चाहिए। We should be touching the beat, feeling the beat, and hearing the sound. तो हमें हमारे उंगलियों से जो माला का स्पर्श होता है उसको हमारे जीवा से जो हरे कृष्ण महामंत्र निकलता है उसको और हृदय से उसको समझना और स्पर्श करना चाहिए। Jai Shlok Nam Bolini, Jai Mahamantra, Sholo Nam Vaitri Shaka Ei Tantra. Mahaprabhu, Krishna, in East Bengal, this is the tantra, this is the process. Sholo Nam Vaitri Shaka, 16 names, 32 syllables. चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि ये प्रक्रिया है 16 नाम और 32 अक्षर का बना हुआ ये जो मंत्र है उसको हमें बोलना और सुनना। Jai Shlok Nam Bolini, Jai Mahamantra. This is no interpretation. These 6 syllables, this sound, this Mahamantra will deliver us. तो उसका कोई नहीं निकालना है। ये जो 16 शब्द और 32 अक्षर है वो हमें कलयुग में हमारे जो माया की जाल है उसमें से बाहर निकालेगा। Number 7, to commit sinful activities on the strength of the holy name. 7वां नाम अपराध है कि पवित्र नाम के बल पर अपराध करना। The holy name is very powerful and very merciful and purifies all sin. पवित्र नाम भगवान का जो है वो बहुत ही शक्तिशाली बहुत ही दयालु है। Ya jiva prevate nam tubyam te puskapate surushashraya. Just by touching the holy name of one's tongue, one has performed all the sacrifices, all of the penances, all of the rituals, traveled to all the holy places. केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जीवा से जप करने से हम सारे यज्ञ सारे दान सारे तप और विश्व के समस्त तीर्थों का जो पुण्य होता है वो प्राप्त उससे भी बड़ा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। Aho bhaksha bhaksha uto kariyam jiva prevate nam tubyam. Even the person born in family of dog eaters,
becomes eligible to perform the Vedic sacrifice by taking your name on their lips. इवन जो चांगवाल भी होते हैं वो भी भगवान का नाम लेके वैदिक यज्ञ करने के लिए योग्यता प्राप्त करते हैं. So we should not take advantage of the mercy and the power of the holy name and carry on with sinful activities. तो हमें हरिनाम जपने से जो शक्ति मिलता है, जो दया मिलती है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए. That is called nam aparad, offense to the holy name. इसे कहते हैं कि पवित्र नामों का अपराध. Sometimes this offense is called the most serious offense. कभी-कभी इस अपराध को सबसे घृणित अपराध कहा जाता है. If we do not do the necessary work and overcome the tendency for sin, then our attaining the goal, love of God, it will be greatly delayed. अगर हम ये नाम अपराध करते हैं तो हमारी भगवत भक्ति आगे बढ़ने की जो गति है बहुत ही कम हो जाती है और हमारा प्रयास, आध्यात्मिक प्रयास जो है वो थम सा जाता है. Number 8, to consider the chanting of Hare Krishna as one of the auspicious ritualistic activities which are offered in the Vedas as fruitive activities, karmakanda. सातवां नाम अपराध है कि हरे कृष्ण. आठवां नाम अपराध है हरे कृष्ण नाम मंत्र के जप को एक वेदों में बताई गई कर्मकांडी प्रक्रिया से Narad Muni, preaching to Vyasadeva, has said, नारद मुनि जब व्यासदेव को Kovarta Aptam Avajanam Sadhana. Even if one perfectly performs all the ritualistic activities in the Vedas, अगर कोई वेदों में बताए गए सारे कर्मकांड की प्रक्रिया एकदम पूर्णता से करता है तो भी if that is Avajanam Sadhana, following one's prescribed duties without chanting the holy name, Kovarta, what is that? Koyatra, where is the gain? तो फिर भी अगर आप वेदों में बताए गए आदेशों को पालन करते हुए भी हरे कृष्ण नाम का जप नहीं करता है तो उसको अपूर्ण माना जाता है. Simply by chanting the holy name, one performs all the ritualistic requirements of the Vedic literature. केवल हरे कृष्ण नाम को करने से वेदों में बताए गए सारे यज्ञ करने का जो स्वभाव होता है As Sutta Goswami Prabhupada establishes in the very beginning of Srimad Bhagavatam, जिस तरह से सूत्र गोस्वामी प्रभुपाद ने भागवतम की शुरुआत में ही ये सिद्धांत को प्रतिपादित किया है. युवताओं सर्वदा Sringatam Swakata Krishna, Sringatam Swakata Krishna, Punya Shravana Kirtana. Just by hearing and chanting the name of Krishna, Punya, one acquires all of the required Punya. जैसे कि गोस्वामी पाद ने बताया है कि श्री कृष्ण के नाम को केवल बैठने से और सुनने से सारे वैदिक कर्मकांड और यज्ञों का फल प्राप्त होता है. Now darshan will go on, but nobody should stand. Wherever you are, you be there only. अभी दर्शन खुलता है.
परंतु किताब इसका प्रभाव और के जो सहयोगी पत्र है उसकी बात करोगे। Fight for mine, first in your life, come bless. और इन सबों की इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में है वो बहुत ही बन Especially when praying for you want to say, हम सब आज के दिन प्रार्थना कर रहे हैं। when you take advantage for advantage of the great thing, immeasurable fortune you are receiving, इसके लिए जो आपको आदर्शनीय भाग्य की प्राप्ति कर रहे हैं इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। and you can quickly attain the goal of Krishna Brahma. और बहुत इसी के साथ आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करके भगवान श्री कृष्ण के दिन के प्रति से अधिकारी बन सके। Krishna Bhakti still Krishna Bhakti not all. इसमें हम कृष्ण और कृष्ण में आपको बताइए। Srila Prabhupada something to Maharajaki, something that all books Kundagi, Kundagi Vaishnava, Kundagi, all my Shishi, that all Jashika Maharaj, everyone, all मीटिंग से प्रभु ज्वाइन करे, प्रभु को भी नहीं हो रहा है ना। डायरेक्ट राइट
Hare Krishna. Have a first darshan of Radha Guru. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वॉइस नहीं आ रही है। मीटिंग में वॉइस नहीं है।
ये और समाधान निश्चित है ऐसा करना हमें बोल जाए मैंने जो आज पहला कैमरा आपसे जैसे जो भी आपने आपको दूर के काम में तुम्हारे हमारे घर से जितना मतलब ये दूर में जो भैया हमारा अपना पाला वैसे ये 9 टाइम it is आगे आगे में मतलब This is very clear, bro. Bro, this yes, bro, it's clear now. हरी बोल प्रभु कैसे हैं? प्रभु हरे कृष्ण भद्र बोला प्रभु हरे कृष्णा yeah Prabhu you're clear Prabhu can you just show how they will come in front of the camera there's this yeah very nice it's very good audio is clear they are sitting in sequence they are sitting in sequence whatever people will look at the list sitting in sequence they have been given the numbers they know the numbers. very good Please announce the date okay and the okay Prabhu okay after that they will after everything connected from this our Zoom link also connected. Temple or online. if you don't have your name okay this will be clean on come on there if you do not hear your name correctly do not you have to list of your names your under context your किसी को आपका नाम सुनने में या आपका नाम हो सुन सकते नाम आपका नाम यदि आप नहीं सुन सकते कोई बात नहीं है आपको विजय से देखिए आपका नाम कोई भक्तों में जो मेरा नाम हो समझ सको चिंता नहीं करता समाज में इंटरेस्ट ही लोग और તમારી જગ્યાએ આપણે અને પછી આનંદ તમે લખશો છે can capture from there. Hello. Can take the photo from this from there. Thank you. Plus models need near to this. yes bro yes bro yes bro everything now yeah yes bro yes we can go now
Now I chant Guru Maharaj's Pranam Mantra. You all chant together. In three obeisances, not obeisances, like we do now. So please lift it with me, and then after when I say that, after finishing it. Vishnu Padaya, Vishnu Padaya, everyone practices with your best. Your name तो आपका प्रणाम हो गया अभी आप अपने भाई को प्रणाम महाराज बोलते कि आपका फिर से बता दें आप प्रणाम आपने प्रणाम कर इधर आके महाराज को प्रणाम नहीं करना आपने प्रणाम कर लिया है आपको आप एक महाराज बोलेंगे कि महाराज मुझे प्रथम दीक्षा प्रदान करें प्लीज गिव मी हरिनाम दीक्षा सो एक्चुअली कैन इन और गुरु नाम इज गिवन एंड गिव यू गिव ऑल दिस नाम देन गिव यू योर वन एवरीवन शुड व्हेन दे कम टू they should tell Maharaj, please give me Harinam, please give me for this day. If you hear this voice, then it is good. ज़्यादा ये आवाज़ करे कि ऐसा महाराज बने स्वतंत्रता हो ये महाराज तो जल्दी हो गया just on this. Okay, I don't know. देखिए तो पेट्रोल जोन पर मैं तो अभी we are waiting for Guru Maharaj to come screen. Until then, Maharaj will speak two words, please together, and नमस्ते सरस्वती गौरवाणी सुंदरवाणी पास्ता विस्तारी श्री कृष्ण चैतन्य श्री हरे कृष्ण 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 Hare Rama, Rama Rama, Hare Ram, Sankirtan, Bhagwan, So how many of you heard the lecture of 10 offenses by Krishna Prabhu? Everybody understood? Language was not a problem. सबको समझ में आया?
How many of you want to continue against the webinar? Please raise your hand. We hear every day those who stay in the temple. We always remember this 10 offenses and try to avoid. You have to remember not to commit, but to avoid. Why we avoid? Because if we chant avoiding 10 offenses, then we get lot of water. But if we chant committing offenses, then we get better offenses. How many of you want 10 offenses? Really? Very good. How many of you want to learn about it? That's what they say. Otherwise, what the system, Krishna prem, Krishna prem, Bhagavad Sarvate, Sarvasutta, Nam Sankirtan. Niraparade, Namavate, Bhagavad. They say that 9% of devotional service is based on all processes of devotional service. Why? Because 9% of devotional service is Bhakti has the potency to give Krishna about Krishna. But superior to that is chanting of the Holy Name. Harinam Sankirtan. One is Japa. Japa means chanting for our own hearing. That is called Japa. And when you chant loudly, Japa becomes Kirtan. And when we do Kirtan together with many devotees, that becomes Sankirtan. What is the Juga Dharma? Juga Dharma is Harinam Sankirtan. So Japa, Kirtan, Sankirtan. So Sankirtan is the most powerful process in this age of Kali. Why? Because we chant without offenses. Then very quickly we can get power. But if we chant with offenses, even if we chant for millions of lifetimes, we will not get power. The purpose is better to get it in this life form. So how many of you can get our bodies now? In this life. Okay. So if we chant the holy name once, purely we get power. That is the power of the Buddhism. So today, how many of you are taking Harinam Diksha? First initiation, Prabhupada, some members. Okay. How many of you are taking Gayatri Mantra, second initiation? So what is the meaning of initiation? Diksha Kale, occupy Atma Sabha. That is the message for Kirtan. Diksha means surrender. Diksha Kale, occupy Atma Sabha. Initiation is nothing external. We are doing so many ceremonies here. But the essence is to surrender to humans. That is the essence. Why? Why you have to surrender? Questions will be asked. So Krishna said in Bhagavad Gita, Sarva Dharma Tyaja Mamekam Saranam Gita. Amukam Sarva Mamekam Bhakshya Sarva. We are always anxiety in this system. Right or wrong? How many of you have anxiety? Sorry, so those who are honest, definitely they will raise hand unless you become a pure devotee of God. Except pure devotee and those who are in border with God. Apart from these two, everybody has anxiety. And what is the cause of anxiety? Lack of surrender. So anxiety and bliss cannot go together. Why we are not experiencing the bliss of consciousness? Because we are having anxiety. And why we are having anxiety? Because we are not surrendered completely to the Supreme Personality of God.
What is the meaning of surrender? I am surrendered. Because I am also surrendered. Surrender means opportunity. After speaking Bhagavad Gita, Krishna told Arjuna, now we can do whatever you want. I spoke it. Arjuna did not respond. Thank you very much. He never said that. What he said? Vishya Bhagavan. I will do whatever you say. That is the meaning of surrender. Surrender means giving up our own ideas. And Kali Yuga, we have a lot of ideas. So when we take initiation, we should give up our own ideas. And we should take the ideas from Guru and their ideas are our own ideas. Okay? So, surrender means following the that is the practical way to explain surrender. Bhaktivinoda Thakur has explained 6 symptoms of surrender. Beginning of surrender is the inner. We have to cultivate what's the quality of humility. In this world, we are very proud because of ignorance. And humility comes from knowledge. And that knowledge is given by the spiritual mind. Not being named for a part and now 40% same way to understand the plan of the guy in the only the explains how to approach the master. Here also it is explained. So the way for the part and the service. Then say where you have to render service. Then we can ask for it. This is the 3 for the 3 days first, what is the first day? We have to surrender. That's like what we are surrendering. Atparna Supa, Dosapa, Provinciana, Parama, Sampuro, Cheta, Jostlina, Kampen, Fishel, Sati, Malta, Propana. Arjuna was doing a very high selection to Krishna. And what was the content of the lecture, essence of the lecture? How he should not fight. He was a nice argument. And after giving the arguments, he became convinced. He did not go whether to fight or not to fight. That is the condition now. So the woman has come. Just again, yeah, he's visible now. I make it screen. So, Hare Krishna, we welcome you. Hare Krishna. thank you very much. So, we'll be hearing from it. Then, initiate that. No, it's a photograph. In the video. No, it's a photograph. No, it's a photograph. I don't know the video. So he's online, but he will come on the video. Guru Maharaj इसलिए प्राणे से गुरुमान ऑनलाइन है आप जब आएंगे ना महाराज के घर से भी करना महाराज के आएंगे या मैं आपको दिखाएंगे गुरु महाराज के पास जाएंगे बैठने में आपको सभी मैं अब करूँगा मेरी इच्छा होगी I am going to make it, okay? I am coming like this. The camera will be focused on me. I will now make it front of them. I just say, Hare Krishna, come here. Hare Krishna, take my hands
इतनी बहुत सारी इनको देखना है तो मैं फिर ऑनलाइन मैं भी वो जो बताया रिलेबल है दैट इस इनिशिएटिव हम आज के माना और ये हो गया ऑनलाइन तो वेबसाइट इन्फॉर्मेशन हम जब आएंगे इधर आएंगे पहले कैमरा का वो दिखाएंगे वो जी को काम करेंगे और माल के पास आएंगे आता जाएंगे जब पहले समझेगा Hare Krishna, Guru Maharaj, Smala, that's what we see. वो अपनी वीडियो ऑन करेगा तो पिन ऑप्शन आएगा नहीं है मैं इधर हूँ वहाँ पे भी ऐसे हाँ आप जहाँ देख रहे हैं जाते रहेंगे अब पहले हम बना के देख सकते हैं we can turn around we can turn around and sit so you can see हमारा Recording in progress. ओके और जब हम गुरु महाराज को खोलेंगे तो बाद में गुरु महाराज का उच्चारण करेंगे आपको बताएगा और सुनेंगे पहली बार Bhakti Prasad Raja Star. Guru Maharaj is asking if Bhakti Prachar Yes, Guru Maharaj. Swami Maharaj is there. Yes. He's there. Go to camera. On my behalf, please allow the beats. On my behalf, you please give out the beads. Maharaj. Yes, Guru Maharaj, this is my humble sincere, some persons are going to your guidance. Yes, sir, I am. I have been instructed to give the Lokmala on your behalf, so I'm sitting here to do that. So Guru Maharaj, we have already done the practices and we have the powers to whom we can start what we have to say and try to make that and start with it. First, to the law of the Honorable Srimati Bhakti Swami Maharaj, our sectors also today, all of our desire, realization, our Asatyagas, our Ahasara, Asala, Angulankai, Jaya, Kantilas, Anande, Sindhara, Jaya, Anandala, Hare Tatsa. Today, we're having online initiations. So today we are having online initiations. So the people who are getting initiated, I'll give them a spiritual name. And on our behalf, like the star
And on my behalf, Bhakti Prachar Paribra Swami will give out the beads. So if you ask that I want some instruction, the vow you took following the 4 regulative principles, chanting 16 rounds japa every day, and also serving Radha Krishna and Lord Chaitanya, Lord Chaitanya wants you to preach to your friends, neighbors, relatives, etc. So you have studied Bhagavad Gita under Namanishta Prabhu. You should continue to study and read Srila Prabhupada's books. I also got my Bhakti Vedanta degree. So this studying is an important part of it's part of the hearing and chanting. We hear the books which were given to us by Srila Prabhupada. So take them very seriously. I'm sure others would have told you the same thing. The initiations now. So I'll chant the Hare Krishna mantra. All the devotees are requested they should very carefully hear the Mahamantra from their right ear. And don't repeat. Once Guru Maharaj finishes the whole Mahamantra, then we all can chant. 1 minute. So before we chant the Hare Krishna Mahamantra, we chant the Panchatattva mantra. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare. Everybody can chant now. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare. When we finish, unmute the mic. Yes, Yes. yes. One was what we hope to see. If you can request Guru Maharaj to chant the mantra again, something got cut off on the online system. So he can chant the mantra again. We can hear it. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Yes, good. First, we'll do the online one. Meenakshi is yes, Guru Maharaj, we have the numbers. Dandavat Pranam. Meenakshi is not a candidate. Dandavat Pranam, Guruji. Meenakshi cannot be taken out from this. Sadar Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna, Archana Mataji, Archana Jayala. Krishna Guruji, Dandavat Pranam. Say,
अभी हम लोग मंगलाचरण बहुत काम पाते हैं पूरा मंगलाचरण के सारे मंत्र बोलकर
अभी सब लोगों के साथ बोलना है। नमो विष्णुपादाय कृष्णकेशाय भूतले श्रीमते जयप्रदाय स्वामी विनायके स्वाहा कृष्ण संबंध नमस्ते गौरवाणी नमो महाराजाय कृष्णाय
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Swaha Swaha सब लोग जोर से वॉलंटियर्स जमा करने को शुरू कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे स्वाहा कृष्णा ध्यान करना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अभी जो भी बचा हुआ है सबके पास हमारा जमा कर लेंगे ऑलरेडी जो भी बचा हुआ है ठीक है
खड़े हो जाइएगा।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama,